travelers, and welcome back to our channel. Today we are diving into a super important topic if you are planning to travel to Europe. The Schengen Visa. ये एक ऐसा वीजा है जिससे आप मल्टीपल यूरोपियन कंट्रीज एक्सप्लोर कर सकते हैं. Amazing, right? So if you have been dreaming of a European adventure, then this video is for you. तो चलिए, let's dive into everything you need to know about the Schengen Visa. तो शेंगन वीजा होता क्या है? ये एक शॉर्ट टर्म वीजा है that lets you travel to 27 European countries within the Schengen area for up to 90 days. Which means no need to apply for multiple visas. Whether you're there for tourism, business or visiting family, this visa lets you experience Europe without the hassle of applying for separate visas for each country. तो एक ही वीजा से आप फ्रांस में एफिल टावर भी देख सकते हैं और फिर इटली जाके पिज्जा भी एंजॉय कर सकते हैं. अब बात करते हैं कि कौन सी कंट्रीज में शेंगन वीजा काम आता है. So you get access to 27 countries including France, Germany, Greece, Italy, Spain, Switzerland, Norway and the list goes on. Basically, it covers a huge part of Europe's best travel spots. Now let's talk about pricing. For Indian citizens, the Schengen visa application fee is 80 euros, which is about 7,000 Indian rupees for adults. For children between 6 to 12 years, it is 40 euros, around 3,500 rupees. और 6 साल से छोटे बच्चों के लिए वीजा फ्री है. पर अगर आप VFS सेंटर्स जैसे कि VFS ग्लोबल के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, then service charges might apply. Now there are also some people who don't need a Schengen visa. जैसे अगर आपके पास ऑलरेडी किसी शेंगन कंट्री का लॉन्ग टर्म वीजा है या फिर रेजिडेंस परमिट है, तो आपको शेंगन वीजा की जरूरत नहीं है. और अगर आप किसी ऐसी कंट्री के सिटीजन हैं जिनका शेंगन एरियाज के साथ वीजा फ्री अग्रीमेंट है, तो भी आपको शेंगन वीजा अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एंड इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स जिनके पास वैलिड US, कनाडा या जापान वीजा है, they can enter the Schengen countries for up to 90 days without a Schengen visa if they are traveling for transit purposes. So, lucky you! अब सबसे जरूरी पार्ट, अप्लाई कैसे करना है. प्रोसेस सिंपल है पर डिटेल्स का ध्यान रखना पड़ता है. फर्स्ट, डिसाइड योर पर्पस ऑफ ट्रैवल, whether it's for tourism, business or visiting family. फिर आपको एम्बेसी या कॉन्सुलेट सेलेक्ट करना होगा जहां आप अप्लाई करेंगे. ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंट्री में सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करने वाले हैं. नेक्स्ट, फिल आउट द वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, either online or download it from the consulate's website. Then book an appointment at the embassy or a visa application center like VFS Global. उसके बाद you have to submit your documents. And don't worry, documents के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे. Then you have to provide your biometrics जिसमें fingerprints and photograph की जरूरत होती है. And इसके बाद if needed you will have to go and attend an interview. Visa processing time usually 15 से 30 days का होता है. So make sure you plan ahead. Now let's talk about the documents you will need to prepare for your Schengen visa. First is a duly filled out and signed visa application form. Next, a valid passport with 2 blank pages जो आपके शेंगन एरिया से डिपार्चर के बाद भी 3 महीने तक वैलिड होना चाहिए. उसके बाद आपको चाहिए 2 recent passport size photos with a white background. You will also require travel insurance with a minimum coverage of 30,000 euros that covers the entire Schengen area. Then you need your detailed flight itinerary showing your entry and exit from the Schengen area, along with your proof of accommodation, आपका hotel bookings या host की तरफ से कोई invitation letter. And you will also have to submit your financial proof. That includes your bank statements, your salary slip and income tax returns. Basically to show that you can afford your stay here. इन सब के साथ आपको देना पड़ेगा एक cover letter जिसमें आप अपना detailed itinerary, आपका purpose of visit और आपका duration of stay बहुत डिटेल में explain करेंगे. Then आपको एक proof of employment भी देना पड़ेगा. That is a letter from your employer stating your position, your salary and approved leave for this trip. अगर आप self-employed हैं, in that case, you will have to provide proof of business ownership. Last, you might have to provide civil status proof like marriage certificates or birth certificates for your children. Now, depending on the specific embassy or consulate, आपको कुछ additional documents भी लग सकते हैं, जैसे invitation letters for your business trips या फिर student proof for study visas. Now talking about the process, which is very simple and straightforward.
बस डॉक्यूमेंट सबमिट करो, बायोमेट्रिक्स दो और एम्बेसी बोले तो इंटरव्यू अटेंड करो। आफ्टर दैट प्रोसेसिंग टाइम यूजुअली 15 से 30 डेज का होता है and you will be notified when your visa is ready for collection. That's it. For official information on European Union visa policy, you can visit the European Immigration Portal. And for updates on the Schengen visa, you can visit the VFS Global India portal. इनके links आपको description box में मिल जाएंगे. Now you have to keep in mind that the Schengen visa is for short-term stays only. You can stay for a maximum of 90 days within a 180-day period. और अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको सिंगल एंट्री वीजा ही मिलेगा, which means you can enter the Schengen area only once. Now let's quickly go over the pros and cons of the Schengen visa. इसकी सबसे बड़ी कन्वीनियंस है कि सिर्फ एक ही वीजा से आप 27 Schengen countries visit कर सकते हो with minimal border checks within the Schengen area. But the main concern is that the documentation has to be detailed and thorough, and the application process can be a little time consuming. Also, you have a limitation of staying only up to 90 days in a 180-day period. But overall, the Schengen visa gives you a great advantage of traveling across Europe with just one visa. So if you are planning a trip to Europe, then consider applying for your Schengen visa through Travel EVA for a smooth and hassle-free application process. If you have any questions, feel free to drop them in the comments below. And don't forget to like, share and subscribe to our channel for more travel content. Until next time, happy travels!